This is the set of several questions. Have a look at these questions first and then try to answer them. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. The current account balance in an open economy, it will always include balance on investment income, right? So उसमें क्या क्या होता है? एक तो current account is going to record trade in goods, trade in services, and the investment income also, and transfers also. So it will always include in balance on investment income. Transfer pricing is the pricing of goods, services, or intellectual property transferred between two subsidiaries of the multinational corporation, right? जैसे कि सब्सिडरीज हों, डिविजन्स हों, एफिलिएट्स हों एमएनसीज के। सो मान लीजिए कोई एक कंपनी है यूएस के अंदर और दूसरी कंपनी इंडिया के अंदर है, उसी की सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है। एंड जो यूएस की कंपनी है that is selling raw materials to company B in India, which is the subsidiary of US company, at very low price. So that is what the transfer pricing is, right? That is what the transfer pricing is. अब इसका ये तरीका हो सकता है, maybe they want to shift profits from high tax country US to a low tax country India. इसका ये भी हो सकता है कि दे वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स इन इंडिया, बिकॉज मे बी शायद इंडिया के अंदर टैक्स रेट्स कम हो, बहुत से। सो बट इन्होंने जो ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए पूछा है, बस दिस मच इज इनफ फॉर अस। देन यू हैव, इफ द ग्रुप ऑफ कंट्रीज दे आर गोइंग टू अबॉलिश ट्रेड बैरियर्स between themselves, then what is that called? That is called customs union, right? So free trade among the member countries, and it applies a common external tariff also to all the non-members. जैसे कुछ member countries हैं and जो members नहीं, वो non-member countries हैं, उनके ऊपर एक common external tariff रहेगा, right? So you will say customs union. Of course इन सब के भी अपने मतलब हैं, common market, free trade area। इन्होंने जो पूछा है, that is the main thing, which is customs union. Okay, then you have this guy, um, the type of externality. So there is an apple farmer who has his orchard next to a bookkeeper, right? अभी क्या चीज है? Whether it is positive consumption, negative consumption, positive production, negative production, who has an orchard next to a beekeeper. So ये तो, it's a good thing. It's a positive production. A is 3, right? Villages downstream from a manufacturing plant. So this is negative consumption. This would be 2. So manufacturing plant की वजह से they are getting the pollution downstream. An unvaccinated family living next door to a family who has received COVID-19 vaccination, right? Who has received COVID-19 vaccination. So this is going to be what? An unvaccinated family living next door to a family who has received unvaccinated family के एंगल से देखें, then this is positive consumption externality, right? Rice farmer who has his field next to a chemical plant. So it is what? It is a negative production externality. Rice farmer को फायदा थोड़ी है. So this is like this. So you have 3214. 3214. That is 1. So what does a bank do if there are no excess reserves? If there are no excess reserves, so if there are no excess reserves, then इसका मतलब है कि बैंक्स को भैया बोरो करना पड़ेगा दूसरे बैंक से, राइट? बिकॉज अगर मान लो लोग आ जाते हैं and they will ask for money and they don't have any excess reserves, then they will have to borrow reserves from the bank. They have to maintain certain reserves with them. So borrow reserves from the bank. जो भी उनकी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं, that has to be met. Then you have, which of the following is not the part of the national income? देखिए नेशनल इनकम में ना सिर्फ वो चीजें ऐड होंगी जो कि प्रोडक्टिव गुड्स एंड सर्विसेज हैं। जो भी अनप्रोडक्टिव चीजों की, those are not going to be added. For example, interest amount on the unproductive national debt, that is not included,
दैट इज नॉट इंक्लूडेड। ये सब तो है, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अनडिस्प्यूटेड पेमेंट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, हाउस होल्ड पेमेंट टू फर्म्स फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो सही है। These are normal things, ये तो इनकम मेथड में इंक्लूडेड है। दिस इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, दैट्स फाइन। दिस इज हाउस होल्ड पेमेंट टू द फर्म्स फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, ये सी तो है। दैट इज व्हाट योर कंजम्पशन इज। सो इंटरेस्ट अमाउंट ऑन द अनप्रोडक्टिव डेट, सिर्फ प्रोडक्टिव डेट के लिए दैट इज गोइंग टू बी इंक्लूडेड। Why is Phillips curve negatively sloped? Right. Phillips curve negatively sloped. So Phillips curve is the relationship between the unemployment and wage inflation. It's a negative relationship, right? तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है तो वेजेस गिरेंगी, या फिर जो वेज में इंक्रीज है वो गिरेगा। अगर अनएम्प्लॉयमेंट घटती है, मतलब लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हैं और फिर आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी है, तो आपको तो ज्यादा वेजेस देनी पड़ेंगी, सो वेजेस तब बढ़ेंगी। So the bargaining power of labor union will decrease with the rise in unemployment. अगर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, तो क्या लेबर यूनियन जाके मैनेजमेंट से कह सकती है कि जी हमारी वेजेस बढ़ाओ"? वो कहेंगे हम काम पे रख रहे हैं, दैट्स इनफ। अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इतनी ज्यादा है, हम वेजेस क्यों बढ़ाएंगे? तो लेबर यूनियन की क्या पावर है, क्या बार्गेनिंग पावर है? कुछ भी नहीं। सो द बार्गेनिंग पावर ऑफ द लेबर यूनियन इज गोइंग टू डिक्रीज विद द राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन एक मिनट, द बार्गेनिंग पावर ऑफ कैपिटलिस्ट इंक्रीजेस विद द राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी तो सही है। हम्म? जो मैनेजमेंट है उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, जैसे अगर लेबर यूनियन की बार्गेनिंग पावर कम हुई तो जो मैनेजमेंट है उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। तो भाई, तो फोर भी सही लग रहा है, बट ठीक है, आई डोंट नो। If GDP of an economy be rupees 100 and the autonomous aggregate investment and the ex-post aggregate savings be rupees 30 in equilibrium, what would be the aggregate saving in the equilibrium in that economy if the aggregate investment remains at rupees 30 only? The average propensity increases from 30% to 40%. भाई सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट है, ये है। और टोटल सेविंग्स क्या होती हैं? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इनटू जीडीपी, यही होगी ना। सो इनिशियली ये था, नाउ से APS dash is 0.4, राइट। APS dash is 0.4, ठीक है। सो सेविंग्स क्या हो जाएंगी? उसके लिए मेरा जीडीपी कितना होता चाहिए? मान लीजिए कुछ भी है, जीडीपी डैश और समथिंग। बट ये किसके बराबर है? इन्वेस्टमेंट के, और इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है? 30 के। सो 0.4 इंटू जीडीपी इक्वल्स टू 30, जीडीपी डैश। सो जीडीपी डैश इज 30 अपॉन 0.4, दैट इज 75, राइट। अब निकालो व्हाट इज योर सेविंग्स। भाई यही आएंगी, 30 आएगा। नो, सो इट विल बी 30 ओनली। The GDP of an economy is rupees 100 crores. The aggregate saving is 30 crores. If the autonomous aggregate investment rises from 30 to 45 crores, what would be the GDP in the new equilibrium? Right? What would be the GDP in the new equilibrium? So you have savings equals to investment. That is S into Y equals to Y. Fair enough. Um, and you know that aggregate savings was 30 crores out of 100 crores. So what is my savings rate? 3 upon 100, 0.3. That is there. So 0.3 into 100, that is equal to 30, और वही था हमारा, right? Now they say that everything else is constant. If the autonomous investment is going to rise from 30 to 45, what would be the GDP? सेविंग्स रेट अभी भी 0.3 है।
So y dash is 45 upon 0.3, which is 150.